from Maharashtra. Well, NewsX has accessed the Maharashtra Food and Drug Administration or FDA's show cause notices to Bollywood actors Ajay Devgan, Shah Rukh Khan and Tiger Shroff over their advertisement for Vimal Elaichi, alleging that it amounts to surrogate advertising for Vimal Pan Masala, a product which is prohibited in the state. The Maharashtra FDA has stepped up action against the sale and promotion of tobacco and pan masala in the state, with the three actors now coming under the regulator's scrutiny. The actors have been asked to submit a written explanation within 15 days as to why legal action should not be initiated against them. All right, let's in fact take a look at that particular FDA notice that has been sent across to these actors. This is from the Government of Maharashtra Food and Drug Administration, Mumbai, as you can see, and the number of the letter also. The details and particulars have been hidden for privacy purposes. And let's look at who these people are. The notice has been served to Mr. Ajay Devgan, who is the actor and also the brand endorser. That's what's mentioned in this particular notice. We are also, in fact, looking at Mr. Shah Rukh Khan, who is also being mentioned as actor and brand endorser. And we are also looking at Mr. Tiger Shroff, who is also the actor and brand endorser. Now, remember that the subject has been stated that this is a show cause notice regarding participation in an endorsement or promotion support of advertisements related to Vimal brand Pan Masala / Elaichi in violation of the provisions of the said act and the rules and regulations notified thereunder. So, they have stated that under section 24 of this Food Safety and Standards Act 2006, it provides for restrictions on advertisements and prohibition as to unfair trade practices relating to food and prohibits advertisements which are misleading or which contravene the provisions of the said act and the rules and regulations made thereunder. However, an advertisement relating to Vimal Elaichi is now available and is also being disseminated at the following link on allied media platforms. So, the show cause notice particularly states that this is a final warning. It says that the advertisement appeared prima facie to be a misleading advertisement relating to food and contrary to the provisions of the Food Safety and Standards Act 2006 and the regulations framed under it. It is also flagged possible violations concerning surrogate or indirect advertising under other laws and guidelines. So, they have in fact, the FDA now has directed the actors to immediately discontinue their participation in and for the endorsement of Vimal Pan Masala / Elaichi. And they have said that remove the promotional content from their official social media handles as well, from the websites and also other digital platforms under their control. They have been given 15 days notice. It has also directed them not to provide any further cooperation or assistance in the broadcasting, publication, dissemination or promotion of this particular advertisement in any form. Remember, the notice also further asks the actors to furnish details of the due diligence undertaken by them or their agencies before participating in this campaign again. So, remember that the FDA was examining this particular advertisement for Vimal Elaichi, and it was said that this was being disseminated through television channels, digital social media platforms and other promotional media as well. And according to the notice, the Vimal brand is prominently associated with Pan Masala in Maharashtra, where Pan Masala containing prohibited substances is in fact banned. Let me go across to my colleague Shahid Ansari, who now joins us with more information on this front. Shahid, ये particular notice है FDA का 3 एक्टर्स को गया है और वो कह रहे हैं कि ये
फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हो सकती हैं। उन्हें कहा गया है कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट से, ऐसे प्रमोशनल कंटेंट से दूर रहें। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र एफडीए ने शुरू से इन सबको लेकर, ये कोई पहली कार्रवाई नहीं। इससे पहले भी जो है महाराष्ट्र एफडीए ने कई जगहों पर भ्रामक विज्ञापन और धोखा देने वाले विज्ञापनों के खिलाफ जो है कार्रवाई की है। अब यहाँ पे भी जो है महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में तीनों पर आरोप लगाया गया है कि वो विमल इलायची के जो विज्ञापन है उसके जरिए जो है प्रतिबंधित प्रोडक्ट पान मसाला का जो है उसका प्रचार कर। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ जो है वो यही नहीं सिर्फ कर रहे हैं बल्कि गुमराह किया गया है। नोटिस में इस आदेश का हवाला दिया गया है जो लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के नियमों के कारण महाराष्ट्र में पान मसाला को बनाना, स्टोरेज करने और बेचने पर रोक लगाता है। कारण बताओ नोटिस में इस बात का उल्लेख किया गया है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, सिगरेट और अन्य टोबैको अधिनियम यानी कोटपा 2013 के केबल टीवी विज्ञापन नियम गंभीर उल्लंघन का जिक्र है। एक्टर पर आरोप भी है कि वो प्रतिबंधित तंबाकू और पान मसाला उत्पादकों को प्रमोट करने के लिए विमल इलायची कैंपेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सही नहीं है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि वो एंडोर्समेंट से जुड़ी सभी गतिविधियां बंद कर दें, अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइट से जुड़े सभी विज्ञापन, प्रमोशनल कंटेंट, वीडियो हमेशा के लिए हटा दें। सीएसएस को अपने एंडोर्समेंट एग्रीमेंट, कैंपेन ब्रीफ और फाइनेंशियल अरेंजमेंट की पूरी कॉपी जानकारी देनी होगी। उन्होंने इस बात का भी जो है दस्तावेज सबूत देना होगा कि विमल इलायची बाजार में असली और अलग प्रोडक्ट के तौर पर मौजूद है। ऑलराइट, और यही धन्यवाद आपका शाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वी आर मूविंग ऑन टू सम अदर स्टोरीज नाउ कमिंग इन।